Good morning students. Today we are going to start our new topic that is estimation. Estimation जिसका मतलब होता है लगभग। देखिए हम आजकल जानते हैं जब आपके पॉकेट में अगर 8 रुपए है तो आपसे कोई पूछे आपके पास कितने पैसे हैं तो आप क्या बोलोगे? लगभग मेरे पास 10 रुपए है। लेकिन अगर आपके पास 2 रुपए है तो आप क्या बोलोगे? लगभग मेरे पास 5 रुपए है या मेरे पास पैसे नहीं है। उसी तरह अगर आपके पास 95 रुपीज है या आपके पास 85 रुपीज है तो आपसे कोई पूछे आपके पास कितने पैसे हैं तो आप उनको जवाब दोगे मेरे पास लगभग 100 रुपए है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आपके पास 45 रुपीज है या आपके पास 35 रुपीज है तो आपसे कोई पूछे आपके पास कितने पैसे हैं तो आप बोलोगे लगभग मेरे पास 50 रुपए है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग राउंड ऑफ एस्टिमेशन या लगभग करते हैं तो लगभग में हम लोग उसका एक बेंचमार्क बनाते हैं। वो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग उसको या तो हम घटा करके बोलते हैं या तो हम बढ़ा करके बोलते हैं। तो घटाकर एक बेंचमार्क जो होता है तो वो बेंचमार्क क्या होगा? तो वो बेंचमार्क होता है 5। वो बेंचमार्क क्या होता है? 5 होता है या 5 के मल्टीपल में होता है। 5 होगा, 50 होगा, 500, 5000 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग बेंचमार्क को लेकर के चलते हैं। अगर हम लोगों का 5 या 5 से कम, 5 आइदर 5 और लेस देन 5 और मोर देन 5। बेंचमार्क क्या हो सकता है? या तो 5 से लेस देन या तो मोर देन 50, less than 50, more than 500, less than 500, similarly less than 5000, more than 5000 and so on। अगर हम लोगों का 5 से कम होता है, अगर हम लोगों का कोई नंबर सपोज करो the number is 4 which is less than 5, अगर ये नंबर 5 से मेरा कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको less than 5 में मानते हैं और 5 से ज्यादा है 6 तो more than 5। सपोज करो 55 it is more than 50, 595 more than 500, 999 more than 500, similarly in the case of 1000 also। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्टिमेट नियरेस्ट टाइम। जैसा कि हम पहले देखें जब भी हम लोग को एस्टिमेशन करना है तो बेंचमार्क ध्यान में रखना है। तो एस्टिमेशन 10 इट मींस बेंचमार्क नियरेस्ट टू 0 to 10, 0 to 4 it is less than 5, 6 to 10 more than 5 and what about 5 का क्या होगा? तो जब हम लोग एस्टिमेशन लेते हैं तो हम लोगों का रूल होता है, रूल फॉर द एस्टिमेशन इज 5 और मोर देन 5 वी ऐड एंड रूल नंबर 2 लेस देन 5 वी लीव एज इट इज। जैसा था हम लोग वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज 5। लेट द एग्जाम्पल इज 5। इट इज मोर देन 5 और लेस देन 5। इट इज नाइदर मोर देन 5 और लेस देन 5। इट इज 5 एंड वी नो द रूल दैट इज 5 और मोर देन 5 वी ऐड। तो 5 है, ये मोर देन 5 है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब ये नियरेस्ट क्या हो गया? This is nearest 10. So we can say the estimation value of the 5 is 10. At the same time, if the example is 3, which is less than 5, then we will leave it as 3. It is 3, or we can say it is 0. As we know that if we have to estimate nearest 10, we have to check the benchmark of 5. Similarly, if we want to estimate nearest 100, 1000 and so on, we have to check the benchmark that is 50, 500, 5000 and so on. Now example के थ्रू देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। Suppose करो the example is 546. If we want to change this number to nearest 10, so we have to check only one's digit. What is one's digit in this number? This is 6. 6 which is more than 5. More than 5 it means we have to add. What we should add? We have to add 10. The number became 546.
50. It will convert it into 0. Then we will add 10. The number became 550. It means 546, which is nearest to 10. It is 550. Now take another example. If we want to convert any number into nearest 100, the number is 3246. Like the number is 3242. We have to convert it into nearest 100. So we have to check only two digits, that is ones and tens place. In this number, the last two digits ones and tens place is 42. We have to compare it with benchmark. The benchmark is 50, and as per the rule it is less than 50. It means we have to leave it as it is. It means we have to write nearest 100, that is 3200. Why? Because it is less than 50. Now take another example for nearest 1000. Let the number is 425326512. Any number. Now we have to convert it into 1000. In 1000 there are 3 0. It means we have to take 3 digits, ones, tens and 100. In this question, in this number, the last 3 digits is 512, and we have to check it is more than the benchmark or less than the benchmark. We will see that 512 is more than the benchmark. It means it is more than 500. Then as per the rule, we have to convert this 512 to 000, and we will add 1000. The number, the estimated value became 5425326000. Is it clear? Now we will take another example, that is ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 57 crore, 98 lakh, 76,235. If we want to convert or estimate nearest 10, 100, 1000 and 10, 1000 and so on for this number, if we want to convert it into nearest 10, we will take example 5. 5, which is more than 5 or less than 5. As per the rule, if the number is more than or equal to the benchmark, we will add. As per the rule, we will add 30 to 10, that is 140. The answer became 57987640. Now nearest 100, we know in the 100 there are 2 0. It means we have to underline the 2 number and compare it with benchmark. The number is 35, which is less than the main benchmark. We will leave the number as it is. Then the number became 57987620. Now if we want to convert it into nearest 1000, we will take 3 digits, last 3 digits, which is also less than the benchmark 500. Now we will, as per the rule, we have to leave the number as it is now, 57987600. Now if we want to convert this number into nearest 10,000, we have to take last 4 digits and compare it with benchmark. The benchmark is 5,000 and we see that the number is more than the benchmark. Then we will have to add 1. It means the answer became 579880. Note, or we can say trick. Very, very important. So learn by heart. You have to learn by heart. दिल से याद कर लो, हमेशा यही रूल होना चाहिए. रूल क्या होता है, एकदम नियरेस्ट, ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरा बताया हुआ एक ट्रिक है. मैथ्स को अगर हम लोग ट्रिक से समझेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है. तो हम लोग को देखना है कि किस में कन्वर्ट करना है. नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है. सपोज करो हमको 10,000 के बाद क्या होता है 1 लाख, नियरेस्ट 1 लाख करना है. We have to convert nearest 1 lakh. So we have to check how many 0 in 1 lakh. There are 5 0 in 1 lakh. If we have to write the estimation value, first of all we have to write 50. What we have to write? We have to write 50. Then
we have to underline last 5 digit from the question. The last 5 digit is 76235. It means it is more than 50,000 or less than 50,000. It is more than 50,000. It means we have to add 1 where the next number nearest the underline, that is 8 plus 1 9, and rest of the number is written as it is 5799000000. It means 1 tens 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 10 crore 57 crore 99 lakhs, nearest 10 lakh. Now we will move to addition through estimation. If the question is 54,327 and 23,456, estimate through addition nearest thousand. First of all, we have to convert 54327 to the estimation value of nearest thousand. As per the trick, there are 30 in thousand. It means we have to write 30. Then we have to check next number 4, which is more than 5 or less than 5. This is less than 5. Then we have to write as it is the number 54. Now the second number is 2, 3, 4, 5, 6. Nearest thousand. The last in thousand there are 30. We have to underline 3 digit and we have to check it is more than 500 or less than 500. This is less than 500. So we have to write the number, that is 23. Now we have to add. We all know how to add. 0, 0, 0, 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7. The estimation value of the addition of this and this is 77,000. Now if the question is subtract, so we have to do same the thing. If the question is subtraction, then we have to subtract in the place of addition. If the question is in multiplication, we have to multiply in the place of addition, as so on in the rule of BODMAS also. Thank you. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा, और इस चैप्टर और इस जानकारी से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो का इंतजार करें. थैंक यू.